डेवलपमेंट पोएट्री में यहाँ तक हुआ था। आगे देखें। Documentary, empirical and rational elements is poem। ये जो पोएम है, डॉक्यूमेंट्री, एलिमेंट्री जो है उनके पोएम में, एंड दिस क्वालिटीज वेयर एविडेंट इन द वर्क ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑल्सो। और ये जो क्वालिटी थी वो इस ग्रुप के मेंबर में भी थी। While Larkin gave high praise to the poetry of Thomas Hardy। While Larkin ने क्या दिया? हाई प्राइज दिया। प्राइज का मतलब होता है महत्व देना। किसके? थॉमस, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है हेर्डी। He tried to discredit the work of the modernist poets। उन्होंने क्या ट्राई किया? डिस्क्रेडिट करना। किसके वर्क को? द मॉडर्न पोइट्स को। जैसा कि सच एज टी.एस. एलियट हो गए, इजरा पॉन्ड हो गए, टी.एस. एलियट, इजरा पॉन्ड, एंड इवन डब्ल्यू.बी. येट्स को भी, ये सब मॉडर्न पोइट्स हैं, उनको डिस्क्राइब। He tried to describe the work of the modernist poets such as T.S. Eliot, Ezra Pound, and W.B. Yeats even. Actually, Larkin had in the beginning been deeply influenced by the symbolist poetry। लड़किन क्या थे? डीपली क्या थे? इन्फ्लुएंट थे, प्रभावित थे। किससे? सिम्बॉलिज्म पोएट्री, सिम्बॉलिस्ट के जो पोएट थे ऑफ W.B. येट्स एंड द फ्रेंच पोएट्स, और जो फ्रेंच पोएट्स थे ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी के जो थे उनकी। He tried to shed this symbolist and modernist influence in favor of the kind of poetry that they and other rationalists had written। जो अदर ट्रेडिशनलिस्ट जो थे उनको क्या किया? ट्राइड किया, इन्फ्लुएंट इन फेवर ऑफ द काइंड ऑफ पोएट्री दैट ट्राइड एंड अदर ट्रेडिशनलिस्ट हैड रिटन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कर लें। Favor of the kind of poetry that Dryden and other traditionalists had written, and yet he never completed outgrow का मैं लिख दिया the लिखने की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, और द सिम्बॉलिस्ट इन्फ्लुएंस, एंड येट तो भी ही नेवर completely outgrow
आउटग्रो का मतलब होता है अपने, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है उसको हम ठीक करें। लिखने की जो प्रक्रिया होती है अपने समान लिखने की जो प्रक्रिया है, और द सिम्बोलिस्ट इन्फ्लुएंस, द सिम्बोलिस्ट इन्फ्लुएंस is paramount in Leclin's early work. Symbolist influence is paramount, बहुत सर चढ़ के बोलता था in Leclin's early work, starting के works में. But the volume in title, लेकिन वो जो संस्करण था किस इन टाइटल में था, क्या टाइटल में था, क्या नाम से था, द विट्सन वेडिंग्स, द विट्सन वेडिंग, ये संस्करण का नाम है, बुक का नाम है. हार्डली शोज एनी सिम्बोलिस्ट, मुश्किल से ही कोई सिम्बोलिस्ट को शो करता है ये जो किताब है, ये जो संस्करण है, द विट्सन वेडिंग्स, और its influence through, और its influence को भी through one or two poems even in this volume have been written in the symbolist mode. 1-2 poems, through 1 or 2 poems, एक और दो पोएम के 1 or 2 poems के थ्रू, even in this volume, इस वॉल्यूम में, have been written in the symbolist mode, इस वॉल्यूम में सिम्बोलिस्ट मोड में लिखा गया. द सिम्बोलिस्ट और येस्ट सीन इन्फ्लुएंस, ये येस्ट सीन इन्फ्लुएंस, येस्टिजीन और सिम्बोलिज्म, दो चीज़ें यहाँ पे. इसका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, जो ओमिशन करने का प्रभाव, वो जो इमिटेशन का इफेक्ट था, रिसर्व्ड this first prominently in the poems of the volume entitled High Winds. High Winds पोएम का नाम है. ये prominently मतलब शान से, in the poem of the volume entitled High Winds, entitled High Winds जो था, resurfaced prominently in the poems of the volume entitled High Winds, in which even the title poem is a symbolist in its handing of its theme. Thus, it came about that Lerkin did not go the whole hog. Whole hog मतलब किसी को झुकाना या झुकना, क्या लिख दिया, in carrying out the aims of the movement. Carrying out मतलब चलाना, किसी प्रथा को चलाना. Because he could never completely cost off का मतलब लिख दिया यहाँ 10 जलाना, किसी को रखना, डालना. The symbolist or the scene, symbolist or is scene or the modernist influence at the same time, और दूसरी ओर this
practice this participation in the aims of the movement, and his affinity with the words of the movement has to be acknowledged. Even thought his participation was on a deliberate or privileged affair. At the same time, his participation का मतलब भाग लेना, किसी चीज में उनका भाग लेना in the aims of the movement, मूवमेंट के एम्स में, एम का मतलब होता है लक्ष्य, एंड हिज एफिनिटी, और उनके एफिनिटी, आत्मीयता, विद द वर्ड्स ऑफ द मूवमेंट हैज टू बी एक्नॉलेज का मतलब होता है बड़ाई करना, किसी के बारे में विशेषता करना, बड़ाई करना. इवन though this participation was not a deliberate, जबकि even though ये participation मतलब ये जो participation का मतलब होता है भाग लेना, ये जो भाग लेना था वो क्या था, उनका एक मतलब उसमें शामिल होना जो था क्या था, not deliberate, deliberate नहीं था, और privileged affair नहीं था. privileged affair का मतलब होता है घटना या मामला. ये पहले से पूर्ण प्लान नहीं था. अब आगे है, चलिए आज यहाँ तक का टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.